Welcome to lecture 16 of NLP. Today we will discuss the transformer architecture, which is a recent development in the NLP as well as in the deep learning literature. And of course, as you all know, the transformer has kind of transformed the landscape of NLP nowadays. So almost all tasks are conducted today via some kind of a transformer. So, as such, transformers have significant importance nowadays. So, today's lecture would be a bit of notation in which we will try to explain the main building blocks of the transformer. So, so as such, I think it's an important lecture. So, so with that, I think let's get started. So, the transformers were invented in 2017, and they were invented primarily as a solution to issues that arise with recurrent neural networks. So recurrent neural networks were meant for processing sequential data, and they were the mainstay of much of NLP till 2017. So all of NLP, for example, neural language models, for example, machine translation, summarization, and other tasks, for example, POS tagging, all of these were done using the recurrent neural network and its variation, which included, of course, the long short-term memory, LSTM, as well as the gated recurrent unit. So these were the dominant models that were in use until up till 2017 when the transformer was introduced. The recurrent neural network was meant to process information in a sequence. And theoretically, it can attend to information that is a way long time at the present time interval. So if you have a long sequence of sentence, it can attend theoretically to any word that is before it. So if I have a sentence like the stars were lit on a black night and the moon was bright and so on. So any word like bright, for example, can attend to any word that was appearing before it. For example, the word star that appears many words before the word bright. But in the standard recurrent neural network architecture, bright would attend to the word that was before it. This would attend to was, and through after was, it will attend to the moon, and then from moon backwards, so one step back at a time. So the information of star reaching the word bright would be lost as it passes through so many words before it. So that was one issue that was found with RNN. Theoretically, it can attend to any word that appeared before it, but since it was a long chain, the information flow was lost through various other informations of words that appeared before that word and the next word. And of course, the other issue was recurrent neural networks were not parallelizable on our modern computers. So vector processing was not possible. So recurrent neural networks were inherently sequential in nature. You process one word, then you take the next word, then you take the next word, and so on. And then, of course, implementing RNN in neural networks often led to multiple layers, and training them often led to problems known as the vanishing gradient problem, because the loss that occurred at the last layer would need to propagate back to the first layer, and that propagation would not occur or would be lost, or the information would be lost because of the vanishing gradient problem. The gradient of the
activation function or transformation function became 0. So because of these reasons, the transformers were proposed. And then, of course, as they say, after that's more or less history. They have overtaken RNN in almost all domains in natural language processing. Okay, so what are the key components of a transformer? So first of all, transformer inputs data as a block of words, or a block of tokens as input. So it's not a sequence. Of course, this block of tokens can be a sequence of the word that I've written above there. But usually the block is fixed. It's not unrestricted. And of course, with time, this block size has increased. So in the starting days, usually this block size was, let's say, about 32 tokens. Then it went to hundreds of tokens. And now even thousands of tokens can be taken at once into a transformer. Okay? And so secondly, basically, each word or token I should use because that's the more general term can attend to any other token in the block directly. So there is no sequential passing of information. So the word bright, for example, can attend directly to the word moon or to the word star that appeared at any position before the word bright. Okay? So this was what is known as the attention mechanism, and this is specifically called the self-attention because it's attention between words in the same stream. Okay? Self-attention. Okay? And then thirdly, of course, it includes other components as well, but as a major uh, characteristics, it can be parallelized or vectorized, you can say, on our modern GPUs. Okay? So you can use vector notations to describe the entire transformer, and then that vector computation, vector matrix computation can be done efficiently on GPUs based machines, and it can be accelerated to a significant amount of significantly. So, so very briefly, let me first show you the overall structure. Remember, a transformer is called a neural network, and we sometimes use terminology from neural network as well as from connectionist systems or even way back to human brains to describe a transformer and other neural networks. But sometimes much easier to just describe it in terms of equations and vectors and matrices because it's easier to understand in that way. उसकी जो figures आप बनाएंगे using the connectionist system, you will never be able to understand a transformer because it has so many components that work together. And if you write them systematically through equations, you will get to understand it in a better way. So let me start with, let's say I have input tokens, which are in general vectors x1, x2, x3 to xn. Okay? So this is the block of words that goes into the transformer. And usually these would be embeddings. So in the book, ये input tokens as embedding sometimes ये E से भी लिखा जाता है, E1 to En, the, the vector E. ठीक है? So this goes as one block into the transformer, but you can think of the transformer as processing each input Xi more or less independently of all the other inputs Xi, except for the uh, attention mechanism. ठीक है? तो so very briefly आपके पास Xi है. If I try to want to describe this as a block, this is the input, तो उसके ऊपर transformer block होगा. Block. Let's say transformer block 1.
just a second. And of course, you can have multiple stacked transformer blocks, one above the other. This is 2. So this is, let's say, transformer block, let's say T. And then you have the output layer here, depending on your problem. This output layer, let's say in a neural language model, would be a multi-class classification layer that provides a distribution over the entire vocabulary. Okay? Or it could be a classification problem where you classify each word into one of its POS tags, like noun, verb, and so on. So the flow of information is from below to above. So you have the input X or embeddings E that goes through transformer block 1, 2, 3 to whatever number of transformer blocks that you have, and then to a output layer until you get the final output. So what is one transformer block? A transformer block also has many things. So a transformer block, of course, has a number of things which we'll discuss one by one. Uh, of course, the ordering might be slightly different, but I will just give you one ordering. So it starts with layer normalization. Okay? Again, bottom upwards. Then you have multi-head attention. Okay? And then a feed-forward neural network. And then maybe another layer normalization. So this is a transformer block. Within a transformer block, there are also numerous components. And within these components, if you want to draw it as a neural network, इसमें फिर different connections दिखाते हैं लोग, जिसको वो कहते हैं residual connections. But as I said, उस तरह understand करना becomes very complicated. Understanding in terms of a stream is much easier. In terms of equations or components that work on a stream is much easier. So मैंने उस context में इसको explain किया. So you have a normalization, then the attention mechanism, then the feed forward network, and then again a normalization, then you get the output of that transformer block. That output goes to the next transformer block, to the next transformer block until you reach the output of the whole network. So any questions so far? So except for the attention mechanism, this stream is kind of independent for each input token. ठीक है, जो xi था हमारे पास input, ये जो सारी स्ट्रीम मैंने बनाई विद इन ए ब्लॉक एंड अक्रॉस ब्लॉक्स और अलोंग द ब्लॉक्स, वो इंडिपेंडेंट है, सिर्फ अटेंशन मैकेनिज्म में इंफॉर्मेशन बाकी वर्ड से उसके पास आ रही है. एंड ऑफ कोर्स अटेंशन मैकेनिज्म इज ऑब्वियसली ए की कंपोनेंट, और वो हम आई थिंक विल स्टडी नेक्स्ट इन अ बिट मोर डिटेल. And specifically in this case, this is called self attention, because we are attending to words in the same block or in the same sequence. ठीक है, अक्रॉस सीक्वेंसेस नहीं कर रहे हम. Of course, in some diagrams, you might think
उन्होंने इस तरह शो किया होता है कि एक ये सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स है एट ए पर्टिकुलर लेवल, इसमें जो वर्ड, एक वर्ड है वो पिछले सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स को अटेंड कर रहा है। अगेन दिस इज जस्ट फॉर ड्राइंग पर्पस ही, बट एसेंशियली इट मीन्स कि ये वाला वर्ड सारे वर्ड्स को अटेंड कर रहा है। ठीक है। पिछले साथ इसलिए दिखाते हैं बिकॉज पिछले जो इंफॉर्मेशन वो यूज कर रहा है, तो यू कैन स्प्रेड इट इनटू लेयर्स इफ यू वांट टू। और इस बुक में भी इन्होंने लेयर्स के फॉर्म में दिखाया हुआ है। ठीक है। बट essentially सेल्फ अटेंशन के एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम एक वर्ड कैन अटेंड टू अदर वर्ड्स इन द सेम स्ट्रीम। ऑफ कोर्स उसकी जो इंफॉर्मेशन माइट बी कंप्यूटर अर्लियर, उसको आप पिछले लेयर में दिखा सकते हैं इफ यू वांट टू शो इट्स स्कीमेटिकली। ठीक है। So we will start with a very simplified model, and then we will be adding complexity to it. And that's how the book also does it, and I think does a fairly good job now. ये बुक के जो प्रीवियस वर्जन्स थे वो इतने कंप्लीट नहीं थे, उसमें एरर्स भी थे। तो दिस वन नाउ, दिस चैप्टर इज नाउ फेयरली कंप्लीट, और एंड आई विल बी फॉलोइंग इट क्वाइट क्लोजली इंक्लूडिंग द नोटेशन। ठीक है। तो वी स्टार्ट विद द सिंप्लीफाइड मॉडल सो दैट यू गेट एन आइडिया व्हाट इट इज। ठीक है। So essentially, what we want is we want to get an output for each input xi. Let's call that ai. So I will write this underscore and caret for subscript and superscript. But sometimes मैं ये नहीं लिखूंगा, तो I hope you can follow with respect to the context. So this caret underscore I means ai, subscript I. So so we are specifically talking about the self attention, and we are talking about just one attention head. एक अटेंशन को यूजली वी कॉल इट ए हेड। सो इसकी जो आउटपुट है ए आई, सो दिस इज गिवन बाय अगेन इन द सिंप्लीफाइड मॉडल एज सम अल्फा आई जे बोथ आर सबस्क्रिप्ट मल्टीप्लाइड बाय एक्स जे, सो वेयर जे इज लेस देन इक्वल टू आई, सॉरी समेशन भी आएगा। सम फॉर ऑल जे लेस देन इक्वल टू आई। ठीक है। सो जे so we are taking information from the previous tokens xj, multiplying it with the scalar alpha ij, which of course is indexed with I and j, to get the output ai. ठीक है। so xi कोई ith token है हमारे पास। again in this chapter we are focusing on causal models or auto regressive model, meaning that any given point in time I, वो इंफॉर्मेशन हम सिर्फ प्रीवियस वर्ड से ले सकते हैं, अगले वर्ड से नहीं ले सकते। So in a subsequent chapter lecture we will discuss that as well, although उसकी small modification है इसी की, but here we will stick to this one कि एक word can only attend to words that before come before it. So the output for the ith token from our attention head is simply given by a linear combination of all the outputs, all the input vectors x that appear before it, including itself, multiplied with some scalar alpha ij. ठीक है। सो अल्फा आई जे इज ए स्केलर। ठीक है। और यू कैन से ए वेइंग फैक्टर कि उसका इन्फ्लुएंस कितना है, व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द जेथ वर्ड टू द आयथ टोकन।
ठीक है, तो jth टोकन टू द ith टोकन। ठीक है, सो ये हमने निकालना है। सो हाउ डू यू कंप्यूट दिस? अगेन यूजिंग द सिंप्लीफाइड मॉडल, we take the inner product to determine product of the two vectors xi and xj to determine how close those two vectors are, or how those similars are. So the score for xi and xj is simply the inner product of xi and xj. So this is the inner or dot product. You can, of course, you know that a dot product would give you a value that ranges from minus infinity to plus infinity in general. Okay? And of course, this is for all j is less than equal to I. And then, of course, this is unnormalized. So what we do is alpha ij is simply the softmax. Remember, softmax can normalize a set of values so that they sum to 1. So we'll do the same thing here. Score xi, xj. Okay? So now this is how we compute the alpha. So for example, xi का डॉट प्रोडक्ट xi के साथ सबसे ज्यादा होगा बिकॉज द सेम वेक्टर। ठीक है, एंड xi किसी और के साथ कोई डॉट प्रोडक्ट होगा। ये सारे जो वैल्यूज हैं, दिस विल बी values would go through a softmax and they'll give you a probability distribution over them that sums to 1. So obviously जो alpha I होगा, that would be the highest value, but other words would also be would have some value depending on the value of the dot product. So in the example that I wrote before, bright जो है that and comes at the end might have a higher alpha ij with, for example, moon and star. ठीक है, because its inner product with bright is higher. Of course, bright with bright would be the highest. And all of these alpha sum to 1, so that the equation that I wrote before for ai is basically a normalized combination, sorry, normalized summation of all the previous input vectors that precedes a current given vector xi, including itself. So of course this is the simplified model, but is the simplified model में आपने देखा होगा there are no parameters, there is nothing to learn here. Uh, it's all based on deterministic math. So learning parameters कोई नहीं है. So now we'll make it more sophisticated, complicated, as well as learnable. तो हम parameters incorporate करेंगे. ठीक है? So first of all, any questions on this? The basic attention idea, meaning that attention is based on how similar two tokens are, and that similarity is quantified by the dot product normalized by the softmax. And the output of a given word is simply the summation of the similarity of that token with some weighted combination of the preceding tokens. ठीक है? So for example, let's say एक simple example पहले ले लेते हैं maybe. So let's say मेरे पास सिर्फ 3 है, x1, x2 and x3. ठीक है, एंड लेट्स से x3 का मैं निकालना चाह रहा हूँ, a3. ठीक है, a3. नाउ आई एम नॉट राइटिंग द सबस्क्रिप्ट. ठीक है, सो a3 में जैसे हमने पहले कहा था समेशन होगी, या मैं एक्सप्लिसिटली लिख लेता हूँ. सो वी हैव अल्फा alpha, so we have 3 for example, multiplied by x3 plus alpha 3 2 multiplied by x2 plus alpha 3 1 multiplied by x1. ठीक है, सो ये हमारे पास आउटपुट होगी ऑफ द अटेंशन मैकेनिज्म, और अल्फा हमने उसी तरीके से निकालना है बेस्ड ऑन द इनर प्रोडक्ट ऑफ x1 x3 विद x2
and x1 and with x3 itself. ठीक है? So if a particular word has a greater attention to it, so let's say x1 के साथ x3 की attention ज़्यादा है, तो alpha 3 1 would be higher as compared to the others. Of course, alpha 3 3 would be the highest. Okay, x1 x3 का dot product with x3 is the highest. That makes sense, right? एक पर्टिकुलर वर्ड है, उसकी हम आउटपुट निकालना चाह रहे हैं, उसकी अपने इंफॉर्मेशन तो सबसे ज्यादा होनी चाहिए, बाकी इंफॉर्मेशन उसमें प्रोपोर्शनली कम होनी चाहिए, ऑफ कोर्स प्रोपोर्शनल टू हाउ वैल्यूएबल दैट अदर वर्ड्स और टोकन्स कंट्रीब्यूट टू दिस टोकन. ठीक है? Okay, so now let's make it a bit more sophisticated. And again, we are still talking about a single attention head. ये बाद में मल्टी अटेंशन हेड की भी बात करेंगे हम. So uh, we will use three concepts which are called the query, and these concepts are somewhat not very intuitive, although लोगों ने इसको database theory से relate किया हुआ है, relate कर भी सकते हैं, but I don't think so I need to go into that. It's better to just go straight to the equations. A key and value. So query key value ये database retrieval में use होती है. There is a query and there is a key of the index, और value जो है उस key की value है. So these terms comes from there. So but we will use this idea but to generalize our model. So we define three parameters: matrices, W, Q. So caret Q is the superscript Q. W caret K and W caret V. So these are matrices. Matrices और vectors के shapes हमने define नहीं किए. So 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 X I इसका shape basically 1 by D है. So it's a row vector. XI या EI जो input embedding है for token I is a row vector. ठीक है? So जो W Q है and as well as W K, this in general is a matrix, and इसकी जो dimensions है वो D by D K है. So dk is another parameter which can be different from D or it can be same as D, but in general, in most practical cases, is different. ठीक है? Usually smaller than D. And then of course we are left with W, V. So this is uh, similar, but इसका थोड़ा सा dimension different. Literature में use करते हैं we D underscore V कह लेते हैं. So in general, dv and dk can be different. They can be same as well. ठीक है? So what are the purposes of these vectors? The purpose of these vectors is to provide a learnable parameter by which we can adapt the vectors xi, xj, and so on in our computation for AI. So in other words, we will get three vectors which we can call qi, small q. So this is going to be xi. This is the row vector x for the ith token multiplied by wq. ठीक है? The matrix wq. So this will give you the row vector qi.
रिमेंबर एक्स आई डी का है, ये डी से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होके इट विल गिव यू ए क्यू वेक्टर ऑफ साइज डी के, डी अंडर स्कोर के। रिमेंबर मैट्रिक्स डब्ल्यू कैरेंट क्यू का साइज डी इंटू डी के है। सो सिमिलरली हमारे पास जो के सो के जे, ये भी उसी तरह एक्स जे इंटू डब्ल्यू के, ठीक है। और सिमिलरली वी वी जे, ये भी जे कर लेते हैं। सो एक्स जे इंटू डब्ल्यू बी, ठीक है। So now we have, instead of using the original x1, x2, x3, we will now be using three forms of those, three different forms of those, and those forms are adopted by these learnable parameters. So for all of those x1, for example, x1 की हम बात करें, x1 का भी q1 होगा, x1 का भी k1 होगा, x1 का भी v1 होगा। और वो किस तरह निकलेंगे? बाय लीनियर प्रोजेक्शन यूजिंग दिस लर्नेबल पैरामीटर मेट्रिसेस w, q and k and v respectively, ठीक है। सो अगेन यहाँ हमारे पास यहाँ लर्निंग आ रही है, लर्निंग कर सकते हैं हम। पहले तो इट वाज ऑल डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है। सो इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स गो बैक टू आवर ओरिजिनल फॉर्मुलेशन। उसको हम थोड़ा सा हम सोफिस्टिकेटेड बना देते हैं, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द ith टोकन, उसका जो आउटपुट ए आई। So this is of course the sum for all j less than equal to I. इसको ब्रेस भी कर सकते हैं, ठीक है, of alpha ij into vj. So rather than using our original xj, in this computation we're using a parameterized version of xj which we call the vj, which is parameterized by the weight matrix wv, ठीक है। Similarly जो आपका स्कोर था, so core of xi and xj is the inner product of now the key and query, ठीक है। So query of course represents the current token of interest qi, and the previous token of interest is kj, तो इसका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। सो रेदर देन अगेन यूजिंग xi एंड xj, अब यहाँ हमने दो डिफरेंट मेट्रिसेस यूज कर लिए, वेक्टर्स यूज कर लिए, qi एंड kj। और वो किस तरह मिले हमको? अगेन बाय सम पैरामीटराइज्ड मेट्रिसेस w, q एंड wk, ठीक है। सो एग्जैक्ट हम potentially वो यूज नहीं कर रहे, we are changing it and then using them, and how we are going to change, we can learn it through our loss function through our neural network, और यही adaptability आपके neural network में आ रही है, ठीक है। of course in this formulation, in the as is usual the practice को हम ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसको हम नॉर्मलाइज करते हैं by the square root of dk. dk by the way is a scalar, so this would divide, the square root of dk would divide every value of this
a score. ठीक है. So for all j less than equal to I. ठीक है. और फिर आपका जो अल्फा है वो उसी तरह ही निकलता है जैसे पहले निकला था. सॉफ्ट मैक्स ले लेते हैं. ठीक है. सॉफ्ट मैक्स ऑफ द स्कोर of xi and xj. Softmax would give you alphas that would sum to 1, meaning that they become probabilities, and all of those probabilities would sum to 1. Okay? And these would then become the weighing factors in our output of the attention mechanism. Okay? So, if you look at the parameters of this one single attention head, we have, what do we have? We have the parameter WQ, uh, WK, and WV. So these parameters, of course, are learnable parameters, adaptable parameters that we learn from data. And using those learnable parameters, we will get an output of one attention mechanism as a linear combination of alpha and Vj. Vj is also, by the way, a learnable parameter. ठीक है? Okay. So all those W's, as you know, and W's, हम जब Q, small q निकालते हैं, small v निकालते हैं, small k निकालते हैं, वो एक simple linear operator है. X multiplied by the matrix W. So there is no non-linearity there. So, अभी तक जो हमने किया है, remember non-linearity is very important in modern day neural networks. So non-linearity अभी कहाँ आ रही है? अभी सिर्फ इस softmax में आ रही है. So softmax is a non-linear function. Remaining जो हमने operations किए हैं, all of them are linear. ठीक है? Okay. So oftentimes, so the output, if so, I mentioned some shapes before. So dimension D. So this is basically input embedding. ठीक है. So this is usually around, let's say, depending on the beddings that you're using, 300, 500, 1000, ये size होगा typical. ठीक है. So then we have dk. So dk was the size of the vectors that we got for q and k. Vectors q and k. So usually this is smaller than. So usually this is less than d in practice. And similarly, dv is usually less than d. Okay? Usually. So, but in modern day transformers, we would like our transformer modules to be kind of modular in nature. So, हमारे पास जो AI है, what is the size of AI? So, remember AI में हम summation, weighted summation करें Vj की. So, this का size होगा basically dv. ठीक है? So, if I want to write it again, AI क्या था हमारे पास? It was simply the sum of alpha ij into vj. तो vj का वेक्टर का साइज क्या है? dv है. तो इसका मतलब ए आई का साइज भी dv होगा. So as I said, modern day transformers, we try to ensure that input outputs are modular, so that we can switch modules easily. तो हम AI का साइज को भी हम बढ़ा देते हैं, so that it becomes, बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं, यूजली बढ़ाते हैं, so that it becomes equal to d. उसके लिए फिर we do another transformation. So maybe आप उसको HI कह लें, AI भी कह सकते हैं, but
अगेन नोटेशन थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी. सो यू कैन डू एन ए आई into another matrix multiplication WO. ठीक है, where WO is another parameterized matrix. ठीक है, इसका साइज क्या होगा? We want an output that is input that takes equal DV into D. तो इसका साइज ये होगा शेप. So that so HI which you can say is the output of one attention head is also of size D, which was the input. ठीक है, इनपुट का साइज भी डी था. हमने कुछ प्रोसेसिंग की तो ओरिजिनल प्रोसेसिंग में हमने देखा कि मे बी जो आउटपुट है ए आई उसका साइज डी वी होगा विच माइट बी डिफरेंट फ्रॉम डी. सो हम वी डू अनदर ट्रांसफॉर्मेशन और उसको डी तक कर ले आते हैं. अगेन ए लीनियर वेक्टर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. ओके, सो एनी क्वेश्चंस सो फार? सो एनी क्वेश्चंस? Okay, so again, so we have increased the complexity. Now we'll further increase actually. Okay, worked example. अच्छा, worked example में obviously they all involve matrix vector multiplication and कोई हम करेंगे भी ऐसे पेपर पे, पेन एंड पेपर पे, वो बहुत छोटा सा होगा, टॉय एग्जांपल होगी. एंड ऑफ कोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट माइट बी यूजफुल. सो जैसे मैंने एक एग्जांपल ये शुरू में दी थी x1 x2 और x3 की, तीन सिंपल ले लें. लेट्स से इफ यू टेक ऑल ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स टू बी स्मॉल साइज, लेट्स से d इज इक्वल टू लेट्स से 3. ठीक है, इसका मतलब है कि ईच x1 x2 x3 इज ऑफ साइज 3. तो आपके पास सिंपल जो ए आई बनेगा, जो ओरिजिनल मेरी इक्वेशन थी, तो बेसिकली यू आर समिंग अप अल्फा इज ए स्केलर ऑफ कोर्स, 3 इंटू x1. ठीक है, इंटू अल्फा, सॉरी ये 3 होगा. तो प्लस ऑफ कोर्स अल्फा 3 2 इंटू x2 प्लस अल्फा 3 1 इंटू x1. So all of these x1 x2 x3 are vectors. So इसका मतलब है कि आपका a भी वेक्टर होगा. Of course, they all of them be multiplied with a scalar. So again, assume मैं कर लेता हूँ स्केलर कोई ले लूँ. लेट्स से ऑल जो तीन अल्फाज मैंने ऑर्डर में लिखे हैं, लेट्स से ये 0.5 है एक, दूसरा लेट्स से 0.4 है और तीसरा 0.1 है. So what will you do? लेट्स से पहला अल्फा आपके पास जो वेक्टर है, पहला x3 का, लेट्स से अगेन टेक एग्जांपल 1 1, सिंपल एग्जांपल हो गया. तो लेट्स से इसका 0.5 0 0.5 0.5. ठीक है, एंड प्लस देन 0.1 इनटू द लास्ट, लेट्स से जो भी मैट्रिक्स है उसका इनपुट, आई कैन टेक 0.1, लेट्स से 0.1 एंड 0.1.
simple vector scalar multiplication, you will get a vector out there. अभी अल्फाज किस तरह निकले हैं वो आपने, जैसे मैंने बताया, if you have all those numbers you can take the dot product and do it. But let's say if ये आपकी computations are based on parameterized versions, then first you will have to compute q. So q would of course be some x multiplied by w. So this is a vector matrix multiplication, it will give you a vector. तो क्यू का साइज यहाँ जैसे हमने 3 कहा था, तो उसमें 3 by 3 या 3 by 2 डिपेंडिंग ऑन डी के आपने क्या लिया. ठीक है. सो ऑफ कोर्स अगेन simple matrix vector multiplication so far with parameters, those parameters would become large as your embedding size would become large. तो so dry run करने के लिए इसी तरह you have to take some small numbers and do it quickly, but of course for larger thing you'll have to write a code for it. ठीक है. तो ये हमने एक अटेंशन हेड डिस्कस किया है. जो मैंने ऊपर कहा था ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक है, उस एक ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक में मल्टीपल अटेंशन हेड्स होते हैं. ठीक है. तो कॉम्प्लेक्सिटी इसमें इस तरह से बढ़ती जाती है. सो दिस वन अटेंशन हेड, within one transformer block they are usually multiple attention head, जिसको हम कहते हैं मल्टी अटेंशन हेड. सो यूजली लेट्स से अटेंशन हेड्स आपके पास ए होते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ठीक है. A is the total number of attention heads within one block. Of course, there can be multiple blocks stacked one over the other. ठीक है. अब इसका मकसद क्या है मल्टीपल अटेंशन हेड्स का? रिमेंबर, एक अटेंशन हेड की इक्वेशंस वही है जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं. मल्टीपल अटेंशन हेड का मेन मकसद ये है कि द आइडिया इज दैट मे बी वन अटेंशन हेड इज अटेंडिंग टू वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, another attention head can maybe attend to another piece of information, a third can attend to another piece of information. अब वो piece of information क्या है, of course explicitly आप बता नहीं सकते, but once in your network is learning it, it might give one attention head a different characteristic as compared to another attention head. So maybe एक ज़्यादा semantics पे focus कर रहा है, एक ज़्यादा syntax पे focus कर रहा है, एक maybe word knowledge पे कर रहा है, and so on. ठीक है. Obviously as uh, yeah, in more abstract way we are saying that we are giving greater flexibility to our model. एक set of parameters हम नहीं दे रहे learning के लिए, इस capital A set of parameters दे रहे हैं. Each of them is independent of the other. ठीक है. So जो सारी जो ऊपर इक्वेशनें लिखी थी, for example, so let's say AI, so this is the output of, let's say this is the output of, जैसे हमने पहले तो एक attention mechanism किया था, now it may be the output of a particular attention mechanism, वो superscript से मैं denote कर दूंगा. So let's say attention mechanism 1 का. इसी तरह मेरे पास AI attention mechanism 2 का आएगा, until AI attention mechanism capital A का. तो हमारे पास इतने आउटपुट्स आ रहे हैं. ठीक है. और हर अटेंशन मैकेनिज्म का वो पैरामीटर सारे डिफरेंट हैं. सो ईच अटेंशन हेड हैज डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ पैरामीटर्स. वो क्या थे? W हमारे पास Q था, W K था, W V था, एंड इवन WO. ठीक है. सो हर अटेंशन मैकेनिज्म का अपना होगा. सो इन ए वे आप इसके आगे भी एक इंडेक्स लगा सकते हैं, I. O का भी एक सबस्क्रिप्ट है विच सेज दैट दिस इज ith अटेंशन मैकेनिज्म. ठीक है.
ठीक है. So a single attention mechanism, we have understood, it takes information from the preceding words using parameters and takes a linear combination of them. And the weighting that we assign to each of the preceding words is based on the dot product and a softmax that kind of normalizes it. Okay? Essentially, that's what it is. The parameters are the ones that give you flexibility. So, but instead of one attention head, we will have multiple attention heads. Okay? Or each one would have a separate set of parameters. Okay? So, so if we talk about the original transformer that was proposed in 2017, उसका जो D था वो 512 था, meaning that the input vector x or embedding E has a size of 512. ठीक है. और उसने D के और DV सेम लिया था और वो 64 थे. ठीक है. So इस सेंस में, एंड ऑफ कोर्स A जो था वो 8 था. There were 8 attention heads in one transformer block. ठीक है. So for one transformer or attention head जो AI होगा उसका साइज क्या होगा? As we said, it will be 64. DV होगा. ठीक है. One attention head has a size of DV. बट हमने ओरिजिनली कहा था कि इसको हम फिर अपग्रेड कर देंगे इनटू ए साइज ऑफ 512. बट ओरिजिनल वालों ने एक्चुअली अपग्रेड उस तरह नहीं किया. दे सिंपली कॉन्कैटिनेटेड ऑल ऑफ देम. सो व्हाट इज 64 टाइम्स 8? सो 512 आ गया. तो मीनिंग दैट हर अटेंशन मैकेनिज्म ने वुड गिव यू ए वेक्टर आउटपुट ऑफ 64. So the first one will give you a vector of 64, the second 64, third 64, fourth 54. सारा को concatenate कर दिया and we got a vector of 512 जो original size था. So हमारा HI was simply now the concatenation of all those AIs from each of those attention heads. ठीक है. So that is also one way of doing it. You don't need the WO parameter. Simply concatenate and get the same size as the input by concatenating the output of individual attention heads. So as you can see, while we are processing X1 or X3 or Xi, we need information from all the other or preceding Xis. So this is where you have information coming from the other inputs. But besides that, the whole transformer block and the entire transformer architecture would not take information from other sides, other words. तो आप समझ सकते हैं कि एक वर्ड की जो प्रोसेसिंग है वो मोर और लेस इंडिपेंडेंट है. नीचे से ऊपर तक एक सेपरेट है आर्किटेक्चर, दूसरे वर्ड का सेपरेट आर्किटेक्चर है, तीसरे का सेपरेट है. ओनली जो अटेंशन मैकेनिज्म में जब जाते हैं वो बाकी सारे वर्ड्स को हम देखते हैं, प्रीवियस वर्ड्स को देखते हैं. बाकी अदरवाइज वी डू इट इंडिपेंडेंटली. ठीक है. So any questions? Okay. So now let's look at some of the other components in the transformer block. So yes, we are still in one transformer block. हम उस ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक में हमने सिर्फ अटेंशन मैकेनिज्म डिस्कस किया है. ठीक है. और अटेंशन मैकेनिज्म शुरू में सिर्फ सिंगल किया है, फिर हमने इसको मल्टीपल कर दिया. By the way, these parameters are not different for different words. These parameters are same for all the words. मतलब आप लेट्स से मैंने कहा ना कि xi है और उसका एक पूरा एक ऊपर स्ट्रीम जा रही है यूं करके, उसमें अटेंशन इस ट्रांसफॉर्म ब्लॉक 1 के अटेंशन हैं, उसके सारे w's हैं.
ये जो सारे डब्ल्यू जो एक्स आई को लग रहे हैं वो एक्स जे को भी वही लग रहे हैं. सो द एक्चुअली आर्किटेक्चर इज द सेम, द पैरामीटर्स आर सेम अक्रॉस द वर्ड्स. ठीक है. बट एज आई सेड प्रोसेसिंग इज मोर और लेस इंडिपेंडेंट. सिर्फ जो अटेंशन जहाँ हम निकालते हैं वहां हम अक्रॉस द वर्ड्स देखते हैं. प्रोसेसिंग इंडिपेंडेंट है. अच्छा. तो सो ब्रीफली मैं जो बाकी दो तीन कंपोनेंट्स हैं ट्रांसफार्मर ब्लॉक के अंदर वो डिस्कस करते हैं. आई थिंक देन आई विल प्रॉब्ली स्टॉप. So I talked about the layer norm, and I also talked about the feed-forward neural network, and there is also something called the recursive connection, or sorry, residual connection. वो terminology of course comes from connectionist systems, neural networks. उतना understand करना ज़रा मुश्किल है. We will understand in the sense of a residual stream. ठीक है. एक stream है, processing हो रही है आपकी. ठीक है. So अच्छा. So let me explain this. नीचे से शुरू होते हैं. सो आपके पास शुरू में एक्स आई है. ठीक है. इनपुट है. अब उसके बाद हमने इसका लेयर नॉर्म ले लिया एक्स आई का. ठीक है. उसी स्ट्रीम के अंदर प्रोसेसिंग कर रहे हैं हम. इसके बाद हमने मल्टी हेड अटेंशन कर लिया इसका एक्स आई का. ठीक है. अब मल्टी हेड अटेंशन वुड गिव यू एन आउटपुट दैट इज, जैसे हमने पहले कहा था एच आई है. ठीक है. इट इज ऑफ द सेम साइज एज द इनपुट एक्स आई. उसके बाद वी एक्चुअली सम अप दिस विद द ओरिजिनल इनपुट. सो लेट्स से इसको मैं एच आई कह देता हूँ. उसके बाद जो प्रोसेसिंग होती है वो हमारे पास आती है एच आई प्लस एक्स आई. ओरिजिनल इनपुट हमने फिर ऐड कर दिया इसके अंदर. ठीक है. अब इसका जो आउटपुट है जो भी निकला, अब ये फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क के अंदर चले गया. ठीक है. और फीड फॉरवर्ड नेटवर्क का जो आउटपुट आया वो हमने अब उसके ऊपर फिर लेयर नॉर्म लगाया. ठीक है. और उसके बाद देन वी आर फिनिश विद द ट्रांसफार्मर ब्लॉक. जो आउटपुट फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क का होगा दैट विल बी द आउटपुट ऑफ द एंटायर ट्रांसफार्मर ब्लॉक. और वो फिर दूसरे ट्रांसफार्मर ब्लॉक को जा सकता है. ठीक है. बाय द वे लेयर नॉर्म लगाया हुआ. ठीक है. सो ये रिसीडुअल इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर कनेक्शंस बैक एंड फोर्थ. जैसे हमने एक्स वन फिर वापस ऐड कर दिया एच आई के अंदर, एक्स आई के अंदर एक्स एच आई ऐड कर दिया, किसी और कंपोनेंट से वापस कोई इंफॉर्मेशन ले ली, तो इसलिए इसको थ्रू कनेक्शंस दिखा रहे होते हैं. बट इट्स मच इजियर टू डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ इक्वेशंस एंड स्ट्रीम्स. प्रोसेसिंग बॉटम से अप जा रही है, एंड दिस इज वन ट्रांसफार्मर ब्लॉक. ठीक है. अच्छा, इसमें अब फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क का क्या काम है? फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क obviously again इसका काम simply to include parameter to have additional variability, adaptability in a network, also include non-linearity. So usually this is a two layer network. ठीक है. इनपुट होता है आपके पास, इनपुट, हिडन, और फिर आउटपुट. ठीक है. इनपुट का साइज डी है, जो हमारे पास हमेशा हमने कहा था मॉडल का बना रहे हैं. जो भी इनपुट का रखा है एक ब्लॉक का या एक कंपोनेंट का, वो दूसरे में इनपुट वही होगा. ठीक है. और जो बीच में जो है अब हिडन है, दिस इज दिस कैन बी एनीथिंग. आई कॉल दिस डी एफ एफ, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क का डी. एंड देन आउटपुट फिर डी है. ठीक है. सो बाय कन्वेंशन एंड बाय एम्पिरिकल एनालिसिस यूजली डी एफ एफ इज ग्रेटर देन डी.
हिडन लेयर का साइज बड़ा है, ठीक है। इससे इसका मकसद क्या है, अगेन टू प्रोजेक्ट योर इनपुट एक्स विच ऑफ कोर्स वो जो प्रोसेसिंग के बाद ऑफ साइज डी इनटू अ हायर स्पेस। मे बी उस हायर स्पेस में आपको फर्दर पैटर्न मिल जाएंगे, फर्दर इंफॉर्मेशन आप निकाल सकेंगे एंड सो ऑन। तो हायर स्पेस में प्रोजेक्ट करते हैं, देन वी प्रोजेक्ट इट बैक। ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दिस इज नॉन लीनियर प्रोजेक्शन। इसमें जो आपके पास एक्टिवेशन फंक्शंस होंगे, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट्स टिपिकली होंगे, या टेंजेंट हाइपरबोलिक भी कर सकते हैं, बट यूजुअली रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट्स, ठीक है। सो दिस इज अगेन एडिंग अडाप्टेबिलिटी, लर्नेबिलिटी इन आवर नेटवर्क। जो एक मल्टी हेड अटेंशन से जो इनपुट आउटपुट निकली है, उसमें हमने वापस सम अप कर दिया ओरिजिनल इनपुट, और वो फिर फीड फॉरवर्ड से गुजार के फिर उसी साइज का डी आउटपुट निकाल दिया, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स यू ऑलरेडी नो द फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। इसमें दो मैट्रिसेस होते हैं पैरामीटर्स के, एक तो इनपुट और हिडन के दरमियान मैट्रिक्स होता है डब्ल्यू, और एक डब्ल्यू होता है फ्रॉम हिडन टू आउटपुट के लिए, और बायस पैरामीटर्स भी होते हैं इफ यू आर नॉट इंक्लूडेड इट इन डब्ल्यू। तो ये आपको इक्वेशंस पहले ही पता है, ठीक है। सो ये पैरामीटर्स भी आपके मॉडल के हैं, एंड दे आर यूजली द सेम अक्रॉस डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है। सो इन अदर वर्ड यू कैन थिंक ऑफ वन फीड फॉरवर्ड नेटवर्क फॉर द एंटायर आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये हो गया, एंड फाइनली द लेयर नॉर्मलाइजेशन। So neural network में many layer normalization techniques have been proposed. The whole idea of layer normalization is to ensure that uh, our training becomes remains smooth and converges easily, and no single value in the vector becomes very large or very small. Okay, so we want to ensure that the values remain within some fixed range. नॉर्मलाइजेशन का मकसद यही होता है ना कि आप वैल्यूज को फिक्स रेंज में रखें या एक विद इन बाउंड्स रखें, एंड दैट उसको रखने से हमारी ओवरऑल प्रोसेसिंग तेज हो जाती है, कन्वर्जेंस भी तेज हो जाती है। तो इन दिस केस वी टिपिकली यूज द जी स्कोर नॉर्मलाइजेशन इन द ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क। द जी स्कोर नॉर्मलाइजेशन टिपिकली हम यूज करते हैं। तो रिमेंबर ऑल वेक्टर्स आर ऑफ साइज डी। तो वो जो वेक्टर जो भी आएगा, जो मैंने ऊपर दो जगहों पे बताया लेयर नॉर्मलाइजेशन होगी, वो जो वेक्टर आया है उसका आपने जी स्कोर नॉर्मलाइजेशन करना है। ऑफ कोर्स जी स्कोर और व्हाट, यूजली बैच। रिमेंबर जी स्कोर में आपने मीन भी निकालना है और वेरिएंस भी निकाल, स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकालनी है, ठीक है। तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन इज कंप्यूटेड ओवर ए बैच, ठीक है। और फिर उसके पैरामीटर्स सेव कर दे। तो ऑफकोर्स इसमें भी वेरिएशंस हैं, अल्फा बीटा वगैरह के पैरामीटर्स भी होते हैं, वो बुक में भी थोड़ा सा दिया हुआ है आपको। बट इन प्रैक्टिस खैर वो भी लर्नेबल पैरामीटर्स होते हैं, अल्फा बीटा। बट द आइडिया इज दैट सिंस वी वांट टू कंप्यूट द मीन एंड वेरिएंस, आई थिंक ये मैं डबल चेक करूंगा। आई थिंक ये बैच वाइज भी कर सकते हैं, विद इन ए वेक्टर भी कर सकते हैं। आई डोंट नो 100% श्योर कौन सा ज्यादा कॉमन। अगेन न्यूरल नेटवर्क्स में ना तरीके डिफरेंट हो सकते हैं। न्यूरल नेटवर्क में इट्स काइंड ऑफ एम्पिरिकल नाउअडेज, बहुत ज्यादा थ्योरी अंदर नहीं है। दोनों तरीकों से भी आप करके देख सकते हैं, यू माइट गेट सिमिलर रिजल्ट्स। सो आई वुड से कि आई एम नॉट टू श्योर जो बुक में बताया हुआ है ये बैच वाला बताया हुआ है या सिंगल वेक्टर का बताया। आई थिंक सिंगल वेक्टर का है, सिंगल वेक्टर नॉर्मलाइजेशन। सो इन अदर वर्ड्स, मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर द वेक्टर, ठीक है। और फिर हर वेक्टर को माइनस करके आप यू गेट ए न्यू वैल्यूज फॉर इट, फॉर ए सिंगल वेक्टर नॉट ए बैच, ठीक है। सो दिस वुड मीन दैट आपके पास जो फाइनल वैल्यूज आएंगी वो उस वेक्टर के लिए जीरो मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन वाली होंगी, ठीक है। सो यू आर काइंड ऑफ ensuring that
some values do not become very large or very small in the negative or in the positive. Okay, so I think I will recap here and then we'll start again from here in the lecture following our midterm. Okay. And obviously, I think most of you would not probably study this lecture because this is not part of the midterm. So, but again, going through this is very important. This is an important section of the course, and we will start again after the mid on this. So recap basically ये है कि so transformer architecture was developed primarily to replace the recurrent neural network. So transformer is inherently not sequential. It's not a sequential, but it can process sequential information using the concept of attention, and which we call self-attention because it attends within a sequence. So एक sequence में एक word इधर है तो it can attend to any other word that has occurred before it, or for that matter after it as well. और वो हम बाद में देखेंगे. ठीक है? So attention mechanism is important, and a transformer consists of transformer blocks, one transformer block, another transformer block, another transformer block, another transformer block. Within the transformer block आपके पास different चीजें हैं. उसमें usually हम start करते हैं with some normalization. फिर उसके बाद मल्टी हेड अटेंशन मैकेनिज्म आ जाता है. वन नॉट वन अटेंशन हेड बट मल्टी हेड. फिर उसके बाद फीड फॉरवर्ड लेयर है. ठीक है. एंड देन अगेन ए नॉर्मलाइजेशन एंड दैट्स द एंड ऑफ द वन ब्लॉक. इसका ब्लॉक का जो आउटपुट है गोज टू द अपर ब्लॉक. उसमें भी वही चीजें रिपीट होंगी. नॉर्मलाइजेशन, उसके बाद अटेंशन मैकेनिज्म, फीड फॉरवर्ड, नॉर्मलाइज, फिर एंड सो ऑन. ठीक है. सो and of course at the end you may have a classification layer, a neural network layer that does the final classification. So that depends on the problem. Peer tagging के लिए आप different करेंगे, language modeling के लिए different करेंगे and so on. ठीक है. The parameters of the model are all those W's that we saw that we use to transform the axis to V, Q, and K. And then the parameters of the feed forward neural network, of course, and there are, of course, a couple of parameters for layer normalization as well. And the nonlinearity are the softmax that we compute for computing alpha, and the nonlinearity in the feed forward neural network. Okay. All right. So any questions? So आपका midterm exam on Monday है, 2 p.m. है. I've already shared with you the syllabus. 2 p.m. to 3:15, 75 minutes. I've shared a format, a tentative format for the exam from a previous offering of this course, but that was 2 hours long. So ये थोड़ा सा छोटा होगा उससे, obviously. ये 75 minutes का है. The questions would be more or less like the ones that you saw in the quizzes. Maybe one or two थोड़े से लंबे हो जाएंगे, and those लंबे obviously would involve some numbers, as you saw in the quizzes as well. So you can bring a calculator, and you should bring a calculator, और help sheet आप ला सकते हैं. Help sheet में आप जो मर्जी लिख लें. I don't really care, but it should be just one page, both sides and one page. Okay. So any question? So this is chapter 8 of your textbook, or I think it is fairly well written, so you should go over it.
तो अच्छी डिस्क्रिप्शन है, आई एम फॉलोइंग इट फेयरली क्लोजली। प्रीवियसली थोड़े से इसमें इश्यूज थे, तो बट दे हैव फिक्स्ड इट नाउ। चलें, ठीक है, सो आई एम गोइंग टू स्टॉप द